Hello students, welcome to our online lecture. This is our third lecture of aldehyde, ketones and carboxylic acid. In last lecture, we have discussed preparation of aldehydes and ketones. In that, we have seen method first method of preparation for aldehyde is Rosenmad reduction reaction. In that, we have used Lindlar's catalyst, which is used to for the reduction of acyl chloride, and it gives aldehyde. Similarly, we have prepared ketone from aliphatic and aromatic that means aliphatic and aromatic ketones by using acyl chloride. In that, dialkyl cadmium is used for the preparation of ketone. Again, the next method of preparation we have seen in last lecture, that is nothing but a preparation of aldehyde from nitriles. And nitriles are nothing but a cyanides, that means C triple bond N. So triple bonded compound is there, so it undergo reduction by using SnCl2 with HCl, that means stannous chloride with HCl. So firstly we get imine hydrochloride and then it undergo hydrolysis, formation of aldehyde. So SnCl2 with HCl is used, so that's why this reaction is called as the Stephan reduction reaction. Okay, so we have taken different examples. Similarly, instead of using SnCl2 with HCl, we have to use dibyl H, that means diisobutyl aluminum hydride. This is also one of the important reducing agent, which is very selective reducing agent, and it produces only C triple bond N species, and we get aldehyde. Understood? And lastly, we have seen the preparation for the ketone again by using nitriles. In that, Grignard reagent is used and it is reacts with nitriles. Finally, we get ketone. Okay. So now the next method of preparation of aldehyde and ketones from aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons like toluene, methyl benzene, ethyl benzene, these are the examples of aromatic hydrocarbons. So by using aromatic hydrocarbons, we have to prepare aldehyde and ketone. So that means we have to use oxidizing agent. That means methyl group is undergo oxidation and we get aldehyde. See the examples. As you can see on the screen, methyl group, that means toluene, having a formula C6H5CH3. Firstly, it undergo oxidation. Okay, oxidation by using chromyl chloride. Chromyl chloride in presence of non-polar solvent. Non-protic solvent. Non-protic solvent means the compound or the solvent which never ever contain any type of proton. That is called as the non-protic solvent. Like water. Water is the having a hydrogen atom, so it is called as the protic solvent. Okay. CH2, that means carbon disulfide. Carbon disulfide में कोई hydrogen atom present है क्या? No. So that means this is nothing but a non-protic solvent. Okay. So in this reaction, we have to use non-protic solvent and the oxidizing agent is chromyl chloride. Firstly, toluene is treated with chromyl chloride in presence of CH2, that means carbon disulfide. Formation of a chromium complex takes place. क्या फॉर्म हो रहा है? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है. Okay. Now this chromium complex, here this is the carbon atom. Okay, means these two hydrogen atoms is get converted into this
OCrOHCl2, and here also OCrOHCl2. Okay, this complex is called as chromium complex. Now this is our carbon atom, main carbon atom. Now it converted into a chromium complex. So we get here this species. Now it undergo hydrolysis in next step, and whenever it undergo hydrolysis, formation of our desired product means this aromatic aldehyde product. Okay, क्या फॉर्म हो रहा है? Aromatic aldehyde फॉर्म हो रहा है. So this is the preparation of aldehyde by using hydrocarbon. Okay, by using aromatic hydrocarbon. So this type of reaction is called as Itard reaction. Now this is one of the again name reaction. What we are seeing in this preparation, firstly toluene, that means C6H5CH3 reacts with chromyl chloride in presence of CH2 as a solvent, that means carbon disulfide as a solvent. Here these two molecules of CrO2Cl2 is required. These two hydrogen atoms are converted into or replaced by, means on ये हाइड्रोजन एटम की जगह पे क्या अटैच हो रहा है? This oxygen CrOHCl2, and again another hydrogen atom is again replaced by this species. So we get this chromium complex. Now this chromium complex it undergo hydrolysis. ठीक है, अब next step में क्या होगा? Which on hydrolysis gives benzaldehyde. Okay, this is called as the Itard reaction. Now similarly, this toluene is again treated with this toluene is also treated with CrO3, that is chromic oxide, with acetic anhydride. Okay, acetic anhydride and toluene are undergo reaction in presence of chromic oxide at 273 to 283 Kelvin. Same reaction takes place. जैसे Itard reaction में हुआ था ना, same reaction यहाँ पे होगी. These two hydrogen atoms from methyl group are replaced by this OCOCH3 group, which OCOCH3 group. Okay, both hydrogen atoms are replaced by this group OCOCH3 group. Now again it undergo hydrolysis, formation of क्या हो जाएगा यहाँ से? ये पूरी की पूरी species बाहर हो जाएगी and we get this benzaldehyde. Again our starting material is toluene in presence of chromic oxide with acetic anhydride at 273 to 283 Kelvin. Formation of this benzaldehyde. Okay, this is also one of the most important preparation of aromatic aldehyde. Okay. One of the most important preparation of aromatic aldehyde. Which of those? First one is the Itard reaction. In that chromium chromyl chloride is used in presence of non-photic solvent. We get benzaldehyde. Similarly, toluene is the starting material which reacts with acetic anhydride in presence of chromic oxide. At 273 to 283 Kelvin, we get again benzaldehyde. Okay. Now, the next method of preparation for aromatic aldehyde is by side chain chlorination of toluene. What is the starting material? Our starting material is again toluene, but the side chain chlorination. That means firstly it undergo chlorination, then we get benzyl chloride, and finally it undergo hydrolysis, formation of benzaldehyde.
Okay, so side chain chlorination of toluene. Firstly, toluene is undergo side chain chlorination by using chlorine gas. Now, as we know, in halogen derivatives of alkane, आप लोगों ने already देखा होगा कि whenever methane या methyl group is there and it undergo chlorination, so this reaction takes place in presence of UV light. That means ultraviolet radiation, which is denoted by AH nu. Understood? So this is the firstly in presence of UV radiation. Firstly, chlorine means hydrogen atom from the carbon atom is replaced by chlorine. So here also the hydrogen atom from this methyl group, two hydrogen atom from this methyl group replaced by Cl, we get CHCl2 with C6H5 and the name of this compound is benzal chloride. क्या है इसका name? Benzal chloride. Okay. And after that it undergo hydrolysis, that means water molecule के साथ addition. So कैसे होगी water molecule के साथ addition? Now this is HOH, right? This is HOH. So यहाँ से ये दो bond break हो जाएंगे और यहाँ से एक bond break हो जाएगा. We get this CHO and these two Cl molecules are combined with this hydrogen atom, formation of HCl takes place. ठीक है? Now this reaction takes place at 373 Kelvin on heating, and this is one of the most important method for the preparation of aldehyde, aromatic aldehyde. So that's why it is very commercial method. It is used for the preparation of aromatic aldehyde like benzaldehyde. Understood? So first of all, we have to use toluene. Now it undergo chlorination in presence of UV radiation. Two hydrogen atoms from this methyl group replaced by chlorine, we get benzal chloride. On heating at 373 Kelvin, gives benzaldehyde. Are you getting my point? So this is very easy method which is used for the preparation of aldehyde. Now the next method of preparation for aromatic aldehyde is Gattermann-Koch formulation of arene. Gattermann-Koch formulation of arene. Now here our starting material is benzene, or we have to use derivatives of benzene also. Can also use this. So simply benzene is used. Now it is reacts with carbon monoxide and hydrogen chloride in presence of anhydrous AlCl3 or cuprous chloride at high pressure. यहाँ पे pressure use करना पड़ेगा. Now this carbon monoxide and HCl form formyl chloride. Okay, क्या तैयार करते ये? Formyl chloride. इसका फॉर्मूला रहता है HC double bond O and Cl. This is called as the formyl chloride. कैसे तैयार होगा ये? Which is prepared by using this CO and carbon monoxide with HCl, right? Carbon monoxide with HCl. Now this forms formyl chloride. Now this forms formyl chloride. Okay. In presence of anhydrous AlCl3 at high pressure. Now we can use cuprous chloride also. Okay, cuprous chloride here De. Now both are act as a Lewis acids because both having a electron deficient species and having a tendency to abstract electrons. Okay, so Lewis acid करके act होते हैं. Now these two CO and HCl
forms formyl chloride, and this formyl chloride reacts with benzene. We get this benzene chloride, and this reaction is called as the Gattermann-Koch formulation reaction. Formyl chloride यहाँ पे तैयार हो रहा है, so that's why it is called as the formulation. And Gattermann and Koch, these are the scientists. ठीक है, तो साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है, so that's why it is called as the name reaction. This is again very very important reaction. क्या करना है यहाँ पे? Only benzene किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? फर्स्टली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl फॉर्म ए फॉर्मल क्लोराइड लाइक दैट HCOCl, एंड ये फॉर्मल क्लोराइड फिर बेंजीन के साथ रिएक्ट होगा, वी गेट दिस बेंजल्डिहाइड. अंडरस्टूड? नाउ the next method of preparation for aromatic ketone is nothing but a Friedel-Crafts acylation of arene. Friedel-Crafts acylation of arene. This is very very well known reaction. Friedel-Crafts, ये आप लोगों ने अल्कोहल में भी स्टडी किया होगा, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन में भी स्टडी किया होगा ये रिएक्शन को. This is very very versatile reaction, a very well known reaction, और हर एक फंक्शनल ग्रुप के चैप्टर में ये रिएक्शन आनी है. ठीक है. So Friedel-Crafts acylation of arene. Friedel-Crafts के two reactions है. One is Friedel-Crafts acylation, another one is Friedel-Crafts alkylation. Whenever alkylation takes place, तो benzene ring पे alkyl group attach होते हैं, तो we get a hydrocarbon like toluene. तो वो आप लोगों ने halogen derivatives of alkene में स्टडी किया होगा. Now this is the second reaction of Friedel-Crafts, and that is nothing but a Friedel-Crafts acylation. acyl group को introduce करना है. How do you define the Friedel-Crafts acylation? Acyl group is nothing but a COR, means C double bond O R, या आप इसको RCO group भी बोल सकते हो. Now this group is called as the acyl group, which is introduced on benzene ring by replacing a hydrogen atom. Okay, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके वहां पे COR ग्रुप अटैच करना है, that is called as the acylation. Okay, अब ये रिएक्शन कैसे होती है? So our starting materials are benzene is one of the important starting material, क्योंकि अपना रिएक्शन ही preparation of ketone from hydrocarbon, so benzene is the hydrocarbon which is reacts with acetyl chloride. Acetyl chloride is nothing but a CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3 and undergo heating. अब यहाँ पे क्या होगा? Now this hydrogen atom, हर एक कार्बन एटम पे हाइड्रोजन तो होगा यहाँ पे बेंजीन में. Now this hydrogen atom from one of the carbon atom is replaced by this group COCH3 group. Okay, और ये HCl चला जाएगा ये हाइड्रोजन के साथ. Now here side product is our HCl, and ये बेंजीन रिंग पे अपना, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप. ओके, और ये हाइड्रोजन एटम Cl के साथ चला जाके यहाँ पे HCl तैयार हो जाएगा, एंड दिस COR ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा. नाउ दिस COCH3 ग्रुप, व्हाट इज दिस? This is C double bond O group, and C double bond O group is called as the ketonic functional group. So here C6H5COCH3. Right, so this is nothing but a acetophenone methyl phenyl ketone. Right ना, methyl phenyl ketone ही बोलते हैं ना, यहाँ इसका कमर्शियल नेम और IUPAC nomenclature is acetophenone. In presence of what? This reaction takes place in presence of again Lewis acid, and this Lewis acid is nothing but a anhydrous AlCl3. Anhydrous AlCl3 मतलब वहाँ पे थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. अगर थोड़ा भी मॉइस्चर होगा अपने कैटलिस्ट में, तो अपनी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी. ओके, सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि एग्जाम में आ सकती है. प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन बाय यूजिंग Friedel-Crafts acylation. Here we have to use benzene and acetyl chloride. These are the two starting materials. Then undergo acylation by using anhydrous AlCl3, formation of acetophenone takes place. Now, the next and last method of preparation for only aldehyde. Okay, only aldehyde from ester. सिर्फ aldehyde ही तैयार करना है यहाँ पे ester से. तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्टिव
रिएजेंट यूज करने वाले एंड दिस सिलेक्टिव रिएजेंट इज नथिंग बट डाइबाल एच अगेन। इसके पहले भी हम लोगों ने इसको यूज किया है टू डाइबाल एच। अगर हम लोग के पास नाइट्राइल ग्रुप है या एसिटिल क्लोराइड ग्रुप है या ईस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे वन इम्पोर्टेंट डाइबाल एच रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो तो अपने को प्रोडक्ट सिर्फ एल्डिहाइड ही मिलेगा। एल्डिहाइड के आगे वो रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होना है। और ईस्टर पे तो नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चंस आए, ठीक है। सो हियर अगेन सिर्फ और सिर्फ अपने को एल्डिहाइड ही तैयार करना है। स्टार्टिंग मटेरियल इज ईस्टर एंड ईस्टर का फॉर्मूला रहता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। ईस्टर कैसे तैयार होता है, यहाँ पे आर सी ओ और एच, ठीक है। तो ये जो एच है, दिस एच इज रिप्लेस्ड बाय आर ग्रुप, राइट। सो दिस एच इज रिप्लेस्ड बाय आर ग्रुप, देन इट बिकम ईस्टर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पे एसिड में एच रहता है, एच की जगह पे आर है यहाँ पे बस। सो इट इज कॉल्ड एज द ईस्टर। सो ईस्टर इज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। Now, the first step, it undergo reduction by using this diol H, diisobutyl aluminum hydride. What is the long form of diol H? Diisobutyl aluminum hydride. Formula is AlHIu by 2. And in second step, it undergo hydrolysis. Finally, we get aldehyde. अभी aldehyde के आगे reduce नहीं होगा, ठीक है, वहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट इज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट अगेन। नाउ दिस ester is undergo reduction by using this diol H formation of aldehyde. एक शॉर्ट ट्रिक्स है कि यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि ये हाइड्रोजन दे रहा है और दिस Al stands for aldehyde। हम लोग ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, तो ester है और diol H उसका नहीं, मतलब aldehyde ही तैयार होगा, ओके। सो दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर aldehyde. Understood? So firstly we have to take ester. Now in presence of diol H as a reducing agent, what is the long form of diol H? Diisobutyl aluminum hydride. So क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि रिडक्शन की डेफिनेशन ही क्या होती है कि हाइड्रोजन को ऐड करो, ऑक्सीजन को निकाल लो, करेक्ट। और सेकंड स्टेप में वहां पे होगी हाइड्रोलिसिस, वी गेट aldehyde. Now here the preparation of aldehydes and ketones completed, okay. Now the next is preparation of carboxylic acid. Preparation of carboxylic acid. First preparation for carboxylic acid is from nitriles and amides, ठीक है, from nitriles and amide. Both are the different functional groups. Both are different functional groups. Nitriles means C triple bond N, उसी को हम लोग बोलते हैं cyanides. And amide is nothing but a RCONH2. Okay. So alkyl nitrile or aryl nitriles. Alkyl nitriles और aryl nitriles मतलब aliphatic भी हो सकते हैं, aromatic भी हो सकते हैं, which on acid hydrolysis gives amide. Which on acid hydrolysis gives amide. And if amide is further undergo hydrolysis, then we get carboxylic acid. Now this hydrolysis takes place by using dilute mineral acid. Now as you can see on the screen, this is cyanide or nitrile. General name is general formula is RC triple bond N और जिसका general nomenclature है alkane nitrile. Firstly, it undergo hydrolysis, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब मिनरल एसिड के प्रेजेंस पे, लाइक HCl H2SO4, ये मिनरल एसिड है, इनके प्रेजेंस पे ये रिएक्शन होगी। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, राइट। सो वाटर के साथ रिएक्शन करना है मतलब क्या, यहाँ पे जाएगा अपना OH
कैसे रहेगी रिएक्शन? दिस इज वाटर ना. नाउ ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से एक ट्रिपल बॉन्ड में का एक बॉन्ड ब्रेक होगा एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू ए डबल बॉन्ड. तो ये ऑक्सीजन कार्बन पे अटैच हो जाएगा एंड दिस हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगा. नाउ फॉर्मेशन ऑफ दिस अनस्टेबल स्पीसीज. नाउ इट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू ए दिस अमाइड स्पीसीज. मींस ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड तैयार करेगा और ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा. नाउ वी गेट अमाइड. Okay, so whenever first hydrolysis takes place, cyanides are undergo hydrolysis, that is acid hydrolysis. Mineral acid की presence में होगी reaction. So firstly, in first step, formation of amide. Now again this amide is undergo hydrolysis. फिर से hydrolysis होगा यहाँ पे. Now again ये HO हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ ही ना, और ये HOH. फिर से ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये HOH बॉन्ड ब्रेक होगा. सो ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा OH और ये हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा एंड फॉर्म NH3. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इन फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, अल्काइल नाइट्राइल और alkyl nitrile which are undergo acid hydrolysis firstly gives amide and on further hydrolysis gives carboxylic acid. Okay, this is called as the acid hydrolysis. Now see the example. Same है alkyl nitrile or the side product is also form NH4Cl because HCl is there na. So NH3 is converted into a NH4Cl also, that means ammonium chloride. Now the second method of preparation of carboxylic acid is from acyl chloride and anhydrides. Now here two different starting materials are used. One is acyl chloride and another one is anhydride. Now again here acyl chloride are undergo hydrolysis with water. Hydrolysis तो water के साथ ही होना है. Forms or produce carboxylic acid. Okay, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. फिर से यहाँ पे वाटर के साथ एडिशन करो, ये HO और यहाँ पे है H. ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा. वी गेट दिस RCOOH प्लस HCl. क्या तैयार हो रहा है? RCOOH प्लस HCl. ठीक है, सो असाइल क्लोराइड which undergo hydrolysis formation of carboxylic acid. This method is very useful for the preparation of aliphatic as well as aromatic acid. Now if you use anhydride, okay, अगर anhydride को यूज करोगे तो क्या होगा? Now anhydrides are also undergo water hydrolysis. तो यहाँ पे क्या होगा? कंसिडर करो कि हाइड्रोजन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. ठीक है, सी यहाँ पे हाइड्रोजन यूज कर रही हूँ और यहाँ पे है OH. वाटर ही दिखना है ना, HOH. नाउ दिस बॉन्ड इज अंडरगो ब्रेकिंग. तो ऑक्सीजन के साथ H चला जाएगा और CO के साथ OH. तैयार क्या होने वाला है? सेम कंपाउंड, दोनों साइड से सेम ही कंपाउंड. सो 2 molecules ऑफ RCOOH ग्रुप, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन. कैसे तैयार हुआ? whenever anhydrides which are undergo acid which are undergo hydrolysis with water gives carboxylic acid. See the example, acid anhydride. Here acid anhydride, what is the formula of acid anhydride? CH3 C double bond O CO CH3 which undergo hydrolysis. फिर से वही करना है, यहाँ पे hydrogen and here OH. Now this bond
ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड और HOH के बॉन्ड बीच ब्रेक हो जाएगा एंड वी गेट 2 molecules of CH3COOH. That means acetic acid, or IUPAC nomenclature is ethanoic acid. Whenever acid anhydride is undergo water hydrolysis, produce 2 molecules of acetic acid or ethanoic acid. Okay. Now the third method of preparation is for carboxylic acid is again very important, that means from ester. Now esters are undergo acid hydrolysis as well as base hydrolysis और उसी को बोला जाता है alkaline hydrolysis. Okay, ester का क्या करना है? Esters are undergo acid as well as base hydrolysis. तो firstly हम लोग देखेंगे acid hydrolysis. So acid hydrolysis of esters. So what is the formula of ester? अब formula तो सबको समझ में आ ही गया होगा. What is the general formula of ester? RC double bond OR. Okay. Now this RC double bond OR is nothing but a ester. यहाँ पे ester चाहिए, गलती से वहाँ पे anhydride हुआ है, ठीक है. Now this ester it undergo acid hydrolysis, मतलब acid के presence में reaction होगी, मतलब water ही react होगा but acid के presence में react होगा, ठीक है. So ये H2O को हम लोग ऐसे लिख सकते H और ये सॉरी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HOH को H तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये OH पे नेगेटिव चार्ज रहेगा. तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कहाँ जाने वाली होगी? सी ये H जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है. नाउ दिस इज OH, HOH ही लिखना है ना, OH पे नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप पे जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज ये ऑक्सीजन के लोन पे तरफ जाएगा. So it become ROH and this become RCOOH, right? So formation of this RC double bond OOH, that means carboxylic acid along with the alcohol. These two molecules are obtained. क्या तैयार हो रहा है? Whenever acid hydrolysis of an ester, formation of carboxylic acid along with alcohol. Now take one example here, ethyl benzoate. Ethyl benzoate is used as a starting material. Ethyl benzoate का formula क्या है? C2H5COO phenolic ring. That means ethyl and इतना group जो है COO C6H5 is nothing but a benzoate group. ठीक है. So ethyl benzoate which are undergo acid hydrolysis produce benzoic acid. अब ये benzoic acid कैसे तैयार होगा? फिर से यही, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब कैसे तैयार होगा ये? यहाँ पे OH एंड हियर H. यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और ये ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ चला जाएगा. Now we get this benzoic acid and ethyl alcohol. Understood? So this is the acid hydrolysis of ester. Acid hydrolysis of ester में क्या करना है? Simply water के साथ उसको react करना है और we get our carboxylic acid with alcohol. Here two products are obtained. Our desired product is carboxylic acid. तो साइक्लिक भी हो सकता है, मतलब एरोमेटिक भी हो सकता है या अल्फेटिक भी हो सकता है, एंड उसके साथ अपने को अल्कोहल भी मिलता है. अंडरस्टूड? Now the alkaline hydrolysis of ester. अब alkaline hydrolysis of ester क्या होता है? Here alkali is used like NaOH or KOH. Strong alkali is used. ठीक है. Now the carboxylic acids can also be prepared by using dilute alkali like dilute NaOH or KOH from the solution of water. We get our carboxylate anion first, sodium salt of or potassium salt of carboxylate anion, which on acidification with water, which on acidification with concentrated HCl gives carboxylic acid. Now see here dilute NaOH is used. ठीक है.
अब यहाँ पे भी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कहाँ पे जाएगी, कार्बन कार्बन पे अटैक करेगी, और एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, सो वी गेट दिस C2H5CO। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में इतनी ONA यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के साथ अटैच हो गया, और ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को अटैच होकर मिथानॉल तैयार हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। नाउ दिस इज द सॉल्ट, सोडियम प्रोपेनोएट। क्या तैयार हुआ है यहाँ पे, सोडियम प्रोपेनोएट, दैट मीन्स प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, which are undergo acidification with water, which on undergo acidification with water। अब अपने को मिलेगा एसिड विथ NaOH। अब ये कैसा, इस यहाँ पे HOH वाटर के साथ ही करना पड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन के साथ OH अटैच होगा और ऑक्सीजन के साथ H अटैच हो जाएगा। Now we get this carboxylic acid, that means propanolic acid with NaOH। Now see here, what is this, this is ester। अब name of this ester is, this is methyl group which is considered as a prefix, और जो इधर की स्पीसीज रहती है उसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट अल्किन। अब अल्केन के इसमें, ईस्टर के इसमें अल्केन का ही रिप्लेस होता है OATE से, मतलब OAT लगाना है। ठीक है, सो ये हो गया मिथाइल ग्रुप, और ये 3 कार्बन एटम का अल्केन प्रोपेन, प्रोपेन का ही रिप्लेस करो OAT से, सो द वर्ड बिकम प्रोपेनोएट, नेम इज मिथाइल प्रोपेनोएट। नाउ इट आर अंडरगो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। कैसे होगा, नेगेटिव पार्ट कार्बोनिल ग्रुप पे जाएगा, पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, सो वी गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, और उसी को बोला जाता है सोडियम प्रोपेनोएट अलोंग विथ मिथानॉल। नाउ इन सेकंड स्टेप, this sodium propanoate is undergo acidification, we get this propanoic acid with NaOH। okay, propanoic acid with NaOH अपने को प्रोडक्ट मिलने वाला है by using alkaline hydrolysis of methyl propanoate। Now the next method of preparation of carboxylic acid is from alkyl benzene। This is very very important, alkyl benzene। Again alkyl benzene is nothing but a toluene, correct। alkyl benzene मतलब क्या होता है, toluene। So aromatic carboxylic acid can be prepared by the oxidation of alkyl benzene with dilute HNO3 or alkaline or acidic KMNO4 or chromic oxide। Here we can use different oxidizing agent like dilute HNO3 or alkaline or acidic KMNO4 or chromic oxide also। Now in this reaction, the alkyl group which contain hydrogen atom, ठीक है, जिसके पास हाइड्रोजन एटम होगा अल्काइल ग्रुप के पास, वही ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है कार्बन एटम पे, कौन सा कार्बन एटम, जो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच है, मतलब ये वाला कार्बन एटम, इस पे अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, कोई भी एक हो, 2 हो या 3 हो, देन इट अंडरगो दिस रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। अंडरस्टूड। और वन मोर थिंग कि यहाँ पे कितने भी लंबे कार्बन चेन हो, प्रोडक्ट अपने को मिलने वाला है फाइनली बेंजोइक एसिड। ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन द एंटायर अल्काइल चेन ऑफ एनी लेंथ इज ऑक्सीडाइज, कितने भी लंबी चेन की अल्काइल चेन हो, इट अंडरगो ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट मीन्स ओनली one COOH group, and tertiary alkyl substituent on benzene is not oxidized। मतलब अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है कार्बन एटम पे, दिस इज टर्शियरी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, वो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसीड नहीं करेगा। अंडरस्टूड। नाउ सी द एग्जांपल, दिस इज टोलुइन CH3 C6H5CH3। कार्बन पे हाइड्रोजन एटम है, यस है, 3 हाइड्रोजन एटम है। नाउ इट अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग दिस KMNO4 विद KOH। पहले क्या होगा तैयार, पोटेशियम, अब KOH यूज किया है तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, देन इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या तैयार होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन और यहाँ पे OH, ये बॉन्ड फिर से ब्रेक, ऐसा फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड विद KOH। अंडरस्टूड। नाउ क्यूमिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सी हियर, cumin or isopropyl benzene, what is this, this is the formula of cumin,
ये किसका फॉर्मूला है, क्यूमिन का, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यस हाइड्रोजन एटम इज हियर, दैट मीन्स ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब ये कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि कितनी भी लंबी चेन हो बेंजीन रिंग पे, दैट डजंट मैटर, ओनली वो कन्वर्ट हो जाएगी COOH ग्रुप में। ठीक है, सो यहाँ पे चेन देखना ही नहीं, ओनली हाइड्रोजन एटम देखना है। So hydrogen atom is present. Now it undergo oxidation by using this KMnO4 with KOH. First step में sodium potassium salt of benzoic acid, that means potassium benzoate. Then it undergo hydrolysis, use benzoic acid. Okay, मतलब ये और ये चला जाएगा और यहाँ पे COO के then COOH group attach होके अपना product desired product मिल जाएगा। See here. Now this reaction proceeds by only aromatic compounds. So aliphatic है, it undergo KMnO4 reduction oxidation, then this reaction not proceed, not possible. Simply benzene ring है तो भी ये reaction proceed नहीं होगी। Benzene ring पे methyl group है, then it undergo oxidation, we get benzoic acid. Benzene ring पे ethyl group है, ठीक है, ये ऐसा ग्रुप है ethyl, इथाइल ग्रुप है, तो ये लंबी वाली चेन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और अपने को प्रोडक्ट यहीं पे मिल जाएगा, दैट मीन्स COOH बाय यूजिंग KMnO4। कितनी भी लंबी चेन हो प्रोडक्ट अपने को वही मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल में, हियर दिस कार्बन एटम और ये कार्बन एटम को दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, टू मिथाइल ग्रुप्स। अभी हम लोगों ने देखा कि कितनी भी लंबी चेन हो कोई फर्क नहीं गिरता, ओनली ये कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, उसका कन्वर्जन हो जाता है COOH ग्रुप में। Here this carbon atom having a 3 methyl group, ये वाला कार्बन एटम पे तीन मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बट फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंडीशन शुड बी अप्लाइड, दिस कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग शुड बी कंटेन हाइड्रोजन एटम, एक तो भी होना चाहिए, मिनिमम 1 हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, नो, ऑल 3 आर द अल्काइल ग्रुप्स, so whether this reaction proceed, no, this reaction is not proceed, understood? Similarly here, in next example, see here, this is carbon atom having a 3 hydrogen atom, that means methyl group। यहाँ पे एक कार्बन एटम है, मतलब एक ही बेंजीन रिंग पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है अल्काइल के, and 2 methyl groups with hydrogen atom, both alkyl groups are undergo oxidation and produce carboxylic group, तो इसका भी कन्वर्जन COH में हो जाएगा और यहाँ पे कितनी भी लंबी चेन हो जाए दोनों का कन्वर्जन COH ग्रुप में हो जाएगा, दैट मीन्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। ठीक है, नेक्स्ट इज बेंजीन रिंग विथ दिस साइक्लिक चेन अगेन, सो यहाँ पे कार्बन एटम with 2 hydrogen atoms present, here also carbon atom with 2 hydrogen atoms present, now it undergo oxidation by using KMnO4, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, and we get this phthalic acid, again dicarboxylic acid, final product is phthalic acid. So this is the most important preparation of carboxylic acid from alkyl benzene, in that you should remember first thing is the carbon atom must contain minimum 1 hydrogen atom, which carbon atom, the carbon atom which is present on benzene ring, and again the entire alkyl chain of this of any length is oxidized to a carboxylic group, कितनी भी लंबी चेन हो जाए अल्काइल ग्रुप की वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ओके, now the last but one preparation of carboxylic acid is nothing but a alkene from alkene, alkene से अब अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार करना है, that means C double bond C, so again carboxylic acid can also be prepared by using oxidation of alkene, here KMnO4 in dilute H2SO4 is used। okay, so यहाँ पे क्या है, KMnO4 with dilute H2SO4 as a again reduce oxidizing agent, and here alkene is used as a starting material। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड कितना भी लंबा हो जाए वहीं से ब्रेक हो जाएगा, एंड वी गेट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड जहाँ भी रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा एंड वी गेट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। टेक वन एग्जांपल अगेन, cyclohexene is used, cyclohexene means
बेंजीन साइक्लिक रिंग होगी अपनी साइक्लोहेक्सिन की और उसमें से एक पाई बॉन्ड होगा, दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लोहेक्सिन विच आर अंडरगो ऑक्सीडेशन। जहाँ से कहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ से अपना जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां से अपनी रिंग ब्रेक हो जाएगी बाय यूजिंग दिस केमनोफोर, और उसकी जगह पे अटैच होगा COOH ग्रुप एंड दिस एसिड इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड। Understood? So from alkene, how will you prepare the carboxylic acid? Carboxylic acids are prepared by using alkene. Here in that strong, that means KMnO4 is used as oxidizing agent with dilute H2SO4. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, वहां से अपनी चेन ब्रेक हो जाएगी एंड वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वो साइक्लिक हो या एलिफेटिक। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ carboxylic acid is from Grignard reagent. This is very important preparation. Okay, so Grignard reagent तो आप सभी को पता है, you are all familiar about the Grignard reagent. Grignard reagent is nothing but a RMgX, alkyl magnesium halide. एंड जहाँ पे RMgX रहते हैं वहाँ पे ये रिएक्शन प्रोसीड होनी चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. So here the solution of Grignard reagent is added to a solid carbon dioxide. That is solid carbon dioxide is called as dry ice. Dry ice बोलते हैं हम लोग solid carbon dioxide को. तो उसके साथ किसकी रिएक्शन करनी है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करनी है. तो फर्स्टली अपने को मिलेगा एक एडक्ट दैट इज कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड विच आर then undergo acidification gives carboxylic acid. So see here, as we know, in case of alkyl magnesium halide, alkyl having a negative charge, magnesium having a positive charge, and halides having a negative charge. Now this negatively charged atom or attack on this carbonyl carbon atom when one of the pi bond is breaking. यहाँ पे क्या तैयार होगा? RCOOMgX, मतलब ये कार्बन पे अटैच हो जाएगा R और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ना यहाँ पे, तो इसको अटैच हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ दिस RCOOMgX. नाउ इट अंडरगो एसिडिफिकेशन, दैट मीन्स वाटर के साथ उसकी रिएक्शन होगी, तो अपने को मिलना है हियर क्या मिलेगा? हियर HO and here H. यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा. We get this carboxylic acid with MgXOH. This is very simple reaction and very important reaction. That means alkyl magnesium halide reacts with dry ice in presence of dry ether, gives RCOMgX, which are undergo acidification, which are undergo acid hydrolysis, which are undergo acid hydrolysis gives carboxylic acid. See the example. Here phenyl magnesium halide. This is one of the Grignard reagent. Phenyl magnesium halide reacts with dry ice. क्या तैयार हो रहा है यहाँ पे? एक complex तैयार हो रहा है and in next step this complex is reacts with it undergo acid hydrolysis gives benzoic acid with MgXOH. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने benzoic acid को तैयार किया by using phenyl magnesium halide as a Grignard reagent and reacts with dry ice. So this is all about the preparation of carboxylic acid. अब हम लोगों ने कौन से प्रिपरेशन लिखी है कार्बोक्सिलिक एसिड की? जस्ट ओवरलुक दैट. फर्स्टली you have seen carboxylic acid preparation from nitriles or from amides. In that water hydrolysis takes place, that means acid hydrolysis, formation of carboxylic acid with ammonia. Secondly, from acyl chloride and anhydrides. Here water hydrolysis takes place, किसका? acyl chloride का और anhydride का. We get acids. Then थर्ड देखा हम लोगों ने मेथड प्रिपरेशन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग ईस्टर्स. ईस्टर में दो हाइड्रोलिसिस, वन इज एसिड हाइड्रोलिसिस एंड अदर वन इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. दोनों केस में अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना है
उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग अल्काइल बेंजीन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। वहाँ पे कंडीशन थी कि द अल्काइल ग्रुप मस्ट कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम एंड कितनी भी लंबी चेन हो जाए वो पूरी की पूरी ब्रेक होकर अपने को एक ही कंपाउंड मिलेगा, दैट मीन्स साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड by using KMnO4 with KOH. Similarly, by the oxidation of alkene, we have to prepare कार्बोक्सिलिक एसिड। वो केस में क्या था, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहां से अपनी चेन ब्रेक होके कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होगा। एंड फाइनली रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके वी हैव टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग ड्राई आइस एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। ड्राई आइस की रिएक्शन अल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ करनी है तो अपने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। So this is all about the preparation of carboxylic acid. यहाँ पे हम लोगों के preparations of aldehydes, preparation of ketones and preparation of carboxylic acid complete हुए। Okay. Now in next lecture we will discuss the physical properties of aldehydes, ketones and carboxylic acid and फिर हम लोग start करेंगे chemical reactions of aldehydes, ketones and carboxylic acid. Okay students. So listen, आप लोग ये लेक्चर्स केयरफुली देखा करो और इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू हैव टू आस्क। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स।